Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q2 and H1 FY26 earnings conference call hosted by Shakti Pumps India Limited. As a reminder, all the participants' lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touchtone telephone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Vikas Verma from Ernst & Young Limited Liability Partnership. Thank you and over to you, sir. Let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risk that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us through the financial results and developments and to answer your questions today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Ramakrishna Satluri, CEO, Shakti Energy Solutions Limited, Mr. Dinesh Patel, Group CFO, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with brief overview of past quarter by Mr. Dinesh Patel. I will now hand over the call to Mr. Dinesh Patel. Over to you, sir. Thank you, Vikas. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us on the call today. Despite a challenging environment, largely led by extended monsoon, we continue to display strong execution capabilities. We delivered a consolidated revenue of rupees 666 crore in Q2 FY26, among the highest in our history, and rupees 1289 crore for H1 FY26, up 7% YOY. Our solar pumps business remains a cornerstone with 39,861 installations in H1 and 22,304 in Q2, growing by 19% and 21% respectively. While weather and GST 2.0 reforms moderated the execution pace in some states, our order book of rupees 1,300 crore as on 7th November 2025 and a strong pipeline across Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, and other states positioned us for sustained growth. Beyond solar pumps, emerging businesses are gaining momentum. Retail sales surged 67% YOY to rupees 43 crores, supported by over 100 exclusive outlets nationwide. Our solar rooftop segment expanded into Rajasthan, Uttar Pradesh, and Maharashtra, leveraging government initiatives like PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Early feedback from dealer engagements has been encouraging, and we see this as a significant growth lever over the next 12 months. Our CapEx plan remains firmly on track, including doubling pump and motor capacity and stabilizing a 2.2 GW solar DCR cell and PV module plant. Receivables looks impacted by extended monsoon and RMS-linked collection cycles stood at rupees 1,639 crore as of 30th September 2025. % are not yet due, while around 38% of receivables are less than 90 to 180 days. Due to the prolonged and excess monsoon, there was less urgency from farmers in running the pumps, which impacted the receivables. However, the urgency for pump installations has returned and substantial portion of receivables is expected to be released this quarter. The payment schedules and cash flow outlook remain aligned with our year-end guidance of 120 days of receivable cycles. We are proud to share that Shakti Pumps received an ESG rating of 75, good by ICRA, and industry recognition as Best Strategy Organization of the Year and Best Employer also. These accolades reflect our commitment
to sustainability, governance, and people. Our diversified order pipeline, operational agility, and strategic investments give us confidence in meeting our 26 guidance and sustain growth beyond. Let me now quickly take you all through the financial performance for Q2 FY26 followed by H1 FY26. Revenue for the Q2 FY26 stood at rupees 666 crores, marking our highest ever quarterly revenue, reflecting a year-on-year growth of 5% compared to rupees 635 crore in Q2 FY25. EBITDA came in at rupees 136 crore with an EBITDA margin of 20.4%. During the quarter, prices of key raw material such as copper, steel, and solar panels increased by around 3 to 4% on account of volatile market condition, thereby impacting the EBITDA margins. Profit after tax for the quarter was rupees 91 crore with a PAT margin of 13.6% in Q2 FY26. For H1 FY26, revenue came in at rupees 1289 crore as compared to rupees 1202 crore in H1 FY25, a year-on-year growth of 7%. EBITDA for the period was at rupees 280 crore with an EBITDA margin of 21.7%. PAT for H1 FY26 stood at rupees 188 crore. Export business continues to gain momentum with the company recording a revenue of rupees 103 crore in Q2 FY26 and achieving a revenue of rupees 200 crore in FY26. Now I would like to request Mr. Ramakrishna Sataluri to share the developments and outlook for the solar rooftop business. Thank you. Thank you very much, Mr. Dinesh Patel. Good afternoon, everyone. The last 90 days was nothing less than very exciting. So in the rooftop business, we focused on getting the basics right because this is going to be the trigger for huge growth as we move forward. We worked basically on three things in the last 90 days, and I'm very happy to share the following. First, we worked on the product. We wanted to give the best-in-class product. The second, we worked on the infrastructure and the processes. And third, we looked at exciting customer offerings in the form of a good EMI scheme. On point number one, that is on the product, very proud to share that our inverter right now, which is a complete made in Bharat, a Swadeshi inverter, is the top class inverter that is there. We have in our test run seen that we are giving more than 10% generation than what our competitors are doing, which makes this a very, very attractive proposition to the customer. I repeat that this is conceptualized and manufactured by Shakti Energy Solutions Limited. So therefore, kudos to the entire team which got this off the block. On the second point of infrastructure and processes, we had a detailed plan. We got our manpower on board at the three states that Dinesh spoke of. We went across to the length and breadth of all the states, and we have already set up 57 channel partners. We have exclusive agreements with channel partners, 57 channel partners, and we have also trained in the process over 400 installers so that we have the differentiation of quality installation when our consumers come on board. We also set the processes right as far as our call center is concerned, how the lead management happens, what are the various IT processes that are involved. We got all of that updated and it is up and running right now. On the third point, we realized after our research from the market that the consumers are also looking at good EMI options. So we have a tie-up with an organization called Eco5, which is in this space doing good business. So we have a tie-up with them and come up with a very exciting EMI offer as well for our customers. So we got all the basics right, and now we
continue to ensure that the training is top of the draw and the customer gets a very differentiated experience when the customer deals with Shakti. So these are the inputs. We are going to work on the basics absolutely right, so that once the takeoff is going to be a very, very good takeoff. That's all from my side as an update on the rooftop business. Now, ladies and gentlemen, I open the floor for questions. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question comes from the line of Ashish from InvestQ PMS. Please go ahead. Yeah, few questions based on the presentation that you've provided. I can see a receivables aging pie chart there. So just wanted to understand, there is a whole lot of percentage of receivables more than even 6 months. I think 20% or 8% is more than 365 days and 11% is given as more than 180 days. So can you clarify what is it? I mean, this is pretty stretched. So if you could give some update on this one, that will be great to understand. Yes, we have given all the aging of the receivables, and we are expecting that in the next quarter we will realize more of them. It says more than 6 months is 20%. So is this really receivables or retention money, or what is it? There is some portion of retention money. Yeah, there is some portion of retention money. Actually, that tender condition is that we will realize our 10% amount based on 90 days RMS. So we can say that the more of the 10% amount is there stuck. But yeah, remaining 90%, we are hopeful we will get in on time. Okay. And didn't understand your comment on the RM, this thing. You said that the rains were heavy and that's why the realizations were affected, receivables were affected. Can you make us understand how the entire thing works? Yes. Yes, because this scheme is agriculture scheme, and then Kusum scheme is saying 10% after 90 days. 90 दिन के बाद आपको 10% मिलना है, 90 दिन पंप को चलना है और 90 दिन पंप को पानी डिलीवर्ड करना है, तब आपको 10% मिलेगा. मतलब उसमें आप ये मान के चलिए कि ये रिटेंशन मनी है. 200, 250 और 300 दिन एवरेज में 90 दिन पंप चलने की कंडीशन आती है. तो रेनी सीजन में वो कंडीशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि पंप चालू नहीं हुआ, तो पंप चालू नहीं हुआ तो 90 डेज नहीं हुआ, इसलिए 10% वाली पेमेंट जो है डिले हो गई. तो ये नेचुरल इरिगेशन हो चुका था वहाँ पे. सर अभी ये क्वार्टर में रियलाइजेशन होना चाहिए ना फिर इन सब चीजों का? हाँ बिल्कुल होगा. यस यस यस, इस क्वार्टर में होगा, बिल्कुल होगा. तो सर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी रिसीवेबल बहुत ज्यादा हो गया, मतलब 1600 करोड़ का रिसीवेबल अगेंस्ट अपना जो टॉप लाइन है बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हमको शायद डेट भी लेना पड़ा है. सो ये थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि ये पोजीशन कैसे क्लियर होगी जल्दी, कि आपका क्या अंदाज है कि ये कितना तक रहेगा गिवन आवर टॉप लाइन, ये कहाँ तक जाना चाहिए FY26 एंड तक रिसीवेबल पोजीशन? हाँ, तो सर जो आपने गाइडलाइन पूछा है, तो हम अभी भी अपने उसमें बिलीव करते हैं कि 120 डेज इज आवर टारगेट फॉर द टीम, और वी आर होपफुल वी विल अचीव इट. और ये जो था ये टेम्परेरी फेज था, इसलिए आपको रिसीवेबल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट ये एक तरह से बढ़ा हुआ नहीं है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं. जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा और कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो वहाँ पे रिसीवेबल्स तो आपको थोड़ा सा दिखेंगे. दूसरी चीज ये है कि जो बारिश हुई है और जिस वजह से हमारा मानसून डिले हुआ है, मतलब मानसून लंबा खिंचा है, नवंबर तक बारिश हुई है, तो उस वजह से जो नेचुरल इरिगेशन हुआ है, तो आरएमएस में जो अभी हमको एक फ्लक्चुएशन दिखा है उस वजह से थोड़ा सा है, पर नेक्स्ट क्वार्टर में ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. और हम जो अपनी ईयरली गाइडलाइन है उसको हम सेम रख रहे हैं कि 120 डेज हमारी टीम का टारगेट है, हम वो अचीव कर जाएंगे. अच्छा सर, दूसरा ये पूछना था कि
कुसुम 2 पे कुछ डेवलपमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे कि कब कितना नंबर्स या कुछ, बिकॉज वो क्रिटिकल है हमारी ग्रोथ के लिए, सो कुछ उस पे डेवलपमेंट होगा तो आप शेयर करेंगे? पहले तो मैं आपको क्लियर करूं कि कुसुम 2 हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है, और कुसुम 2 की तैयारी भारत सरकार कर रही है और वो आ रही है और आएगी आगे, क्योंकि अब तो बिना कुसुम के भी लोग काम करने लगे हैं। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बिना कुसुम के टेंडर्स हुए हैं और दूसरे भी स्टेट इस बारे में सोच रहे हैं कि वो अपना टेंडर्स लाए। मध्य प्रदेश भी सोच रहा है कि वो उस पर काम करेंगे और महाराष्ट्र तो ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट कर चुका है और उन्होंने बहुत अच्छे पंप्स इंस्टॉल भी किए हैं। तो दोनों ही है कि अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो कुसुम भी चालू रहेगा और गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर करेगी। अदर देन कुसुम भी अभी, हाँ अभी इस पे आता हूँ पहले कि अदर देन कुसुम भी जो हम लोग हमारे जो 100 से ज्यादा हमारे एक्सक्लूसिव काउंटर हम खोल चुके हैं और अभी इन 6 महीनों में वहाँ पे हमारे पास अराउंड 43 करोड़ की सेल भी आ चुकी है। तो आने वाले समय में हम कैश सेल की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि अभी इसमें हम अपना एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ कर रहे हैं और हमारी जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसमें भी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, ऑर्डर बुक जो मतलब विदाउट एनी सब्सिडी मैकेनिज्म वाले सेल जो मार्केट में कर रहे हैं। यस ओके। और जो 1300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यस ऑर्डर बुक 1300 करोड़ की है। इसमें एक्चुअली हम ऑर्डर बुक और भी थोड़ी बड़ी कर सकते थे, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से, जैसे यूपी है या और भी एक दो स्टेट में जीएसटी की वजह से फार्मर शेयर कम हुआ है। तो फार्मर शेयर कम होने के लिए वो उसको कैसे वापस फार्मर शेयर रिफंड करना है या एडजस्ट करना है, वो डिसीजन गवर्नमेंट अभी नहीं ले पा रही है। तो इस महीने में हमको लगता है कि वो डिसीजन भी हो जाएगा, जिससे कि वो भी हमारी सेल ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होगी और सेल में कन्वर्ट होगी। जीएसटी की वजह से कुछ स्टेट ने अपने ऑर्डर्स होल्ड किए हैं। अच्छा, तो सर अभी आप कैसे देख रहे हैं ये स्टेट वाइज ऑर्डरिंग सिचुएशन कैसे रहने वाली है अगले 6 महीने में? हाँ, हमने हमारी ईयरली जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन पे हम हैं कि उसको हम अचीव कर लेंगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू आशीष। Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address all the participants in the question queue, please restrict your questions to 2 questions per participant. The next question comes from the line of Aditya Vora from Sohan Asset Manager. Please go ahead. या हाय सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट हम मार्च 24 से लेके आई थिंक पिछले क्वार्टर तक वी कंसिस्टेंटली बीन डूइंग 23 से 25% मार्जिन एंड नाउ द मार्जिन्स हैव कम डाउन टू 20% इन दिस क्वार्टर। तो इसमें कितना स्ट्रक्चरल रहेगा, दैट वाज वन थिंग। एंड ऑल्सो वी हर्ड दैट ये जो मागेल तेरा स्कीम है महाराष्ट्र में, that has been doing a lot in terms of execution, but वो pricing काफी कम हो गया है वहाँ पे, so there has been a lot of pricing pressure in that, which is obviously evident in your realization also. So my question, could we see this 20-21% as the sustainable new margins, or how do we look at it that way? So, like for this, we have already mentioned that some raw material price gone up in this quarter, but and we are seeing that it will get reduced in the next upcoming quarter. So we will maintain the margin guideline and this revenue guideline. There is no change in the guideline. So आप बोल रहे हो कि ये जो 20% is a one-off, right? ये इतना, this is not going to be a structural fall in margin. Yes, because we are seeing that operational leverage will give us some extra margin to maintain this guideline. Right. Our execution, we have executed too many pumps in this H1, and we will continue this execution, so it will help us to maintain the margin. Okay, right. And secondly, in terms of receivables, जो हमारा 1600 crores का receivable है, and you alluded to the fact that ये September का number है, obviously things have improved in October and November. तो अभी का क्या latest figure रहेगा? If directionally you can tell us that, you know, ये 1600 debtors का इतना percentage आ गया है, just to understand कि how the cash flow is.
सर उसको डेली बेसिस पे हम लोग नहीं बोलते हैं, अभी हम 1600 पे बात कर रहे हैं। क्वार्टर एंड होने के बाद में फिर मैं आपको नए फिगर्स दूंगा जब ऑडिटेड हो जाएंगे उसके बाद में। राइट राइट, ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Puneet Mittal from EBSU Investment Advisors. Please go ahead. हेलो, थैंक यू वेरी मच। मेरा खाली एक क्वेश्चन था, दिस इज रिगार्डिंग ये सोलर रूफटॉप। अगर आप यू कैन गिव मोर कलर ऑन हाउ डज दिस स्कीम वर्क, व्हाट इज द क्रेडिट साइकिल, व्हाट इज द सेल प्रोसेस लाइक, बिकॉज यू मेंशन्ड दैट यू अपॉइंटेड चैनल पार्टनर्स, EMI, इनका मार्जिन कैसा है। सो बेसिकली जस्ट मोर कलर और पोटेंशियल ये सोलर रूफटॉप बिजनेस के बारे में वुड वेरी हेल्प। Yes. Good afternoon. This is largely the rooftop business is under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So what the consumers do is they go to the portal and register themselves, and once they are registered, they have the freedom to buy any of the brands that are available to them. Okay. Then after they select it, so we get to know whoever has selected it. We go to the consumer and we make a pitch about our product and services. Right. So the business model is our channel partners, our dealers, buy the material from us in advance. Okay, and they go and install it at the customer location, and they go to the customer location, install it, and collect the money from the customer, right? And the customer, after the installation is done, directly gets the subsidy amount of 78,000 rupees from the government. So this is the entire cycle. But to cut it short, this business we will do it on a advanced basis with our customers, with our dealers, and dealers buy it, sell it to the customers. So, what is the margin profile for this business in that case, and also the working capital cycle? We are just putting this entire plan together on the margin. It's a very competitive market, so we are putting this entire plan together, and I don't want to make any forward-looking statements on this. Once we actually hit the ground and realize it, then I will share all the details with you, if that is okay. That's fine. But just to understand, what is the industry may be, what is the margin that the best players are working on, and the working capital cycle, just on average industry level? The average industry margins, and this is just out of conversations that I have, could be in the range of around 15%, 10 to 15%. And also, do we need to empanel ourselves like we do in the solar pump, because in every state, because it's a government subsidy program? Right. So there are two kinds of enrollment. One is at a brand level, and the other is at an installer level. So at an installer level, on the ground, a lot of people do enroll themselves. What we have done is we've also enrolled ourselves at a brand level. There are totally only 5 players who have enrolled at a brand level. So that is the enrollment process. So we will have all the partners, say the 57 partners that we have, they would be enrolled on the portal, and beside them, it would show Shakti. Okay, got it. The second question, Dineshji, was on the MP. So the MP, CM had announced 90% subsidy for the farmers as far as the news reports went. तो वो जो स्कीम है वो कब से शुरू होने वाली है, उसका
कितने पंप को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह, उसका टाइमलाइंस कुछ है, बता सकते हैं? एक्चुअली एमपी को लेकर थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही वो अलग फेज में इसको फाइनेंशियल अरेंजमेंट लेके जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट अलग से ले रहे हैं, तो उनका एक अलग ही कंसेप्ट है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में उनका सेल स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ कमिट किए हैं। उन्होंने पोर्टल खोला है, ऑलरेडी हमारे बीसीआर पंप उसमें फार्मर से सिलेक्शन किए हैं, और आने वाले समय में जैसे ही ये लोग इसको लाएंगे इस पे सिस्टम पे, और आने वाले समय में हमको लगता है कि क्योंकि इसमें डिसीजन इन्हीं को लेना है, मध्य प्रदेश को ही लेना है, कैबिनेट में डिसीजन होना है, तो अगले 1-2 महीने में शायद हमको लगता है कि इससे कुछ बिजनेस स्टार्ट होगा। एमपी की पोटेंशियल कितनी है, मतलब रिक्वायरमेंट कितने पंप्स की है ओवरऑल? एमपी में कितने सोलर पंप्स की आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स है? हाँ, एमपी में हमारे सीएम ने बोला है कि वो 30 से 35 लाख पंप लगाना चाहते हैं, लेकिन एक बार ये सिस्टम सेटल हो जाए तो जरूर हम भी इसमें अच्छा काम करना चाहेंगे। Very good. Thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Achal from Nuvama Institutional Equities. Please go ahead. Good afternoon, sir. Two questions. First, if you could provide us the update on the solar cell. Where are we? What capex? When do we expect it to commission? How do we see the scale? Yeah. So actually we are planning for 2.2 gigawatt. That is for solar cell and solar module, and it will commission by March 27. So we will get the revenue from March 27 onwards. And we have total capex plan of around 1200 crore, which will be an implementation period is around 18 months. And what kind of scale up can we see from this 1200 crores investment? What is the potential revenue? So after this investment, we are in the position to achieve the 5,000 crore revenue for this company. No, only for this investment, sir. Solar cell and module I'm saying. What would be the potential revenue out of this 1200 crores of capex, and what margins one would expect? So actually this 2.2 giga is sufficient for around 4,000 crore revenue. And for 75% capacity, we can say it can generate around 3,000 crore. And we are expecting around 15% EBITDA level. So 450 crore per year it will generate. And this 1200 crore we are expecting within 3 years we will get back. So the payback period is around 3 years. Understood. And how much of that will be captive? We are first preference for captive, and whatever the excess production capacity available at that time, we will take the decision for export business and domestic business. Got it. The second question I have is, if I understand you right, you said we are maintaining our 25% kind of what we had earlier indicated, the revenue growth for FY26. We have. Yes, sir. Yeah. So we told that whatever management has committed in the March call, we are maintaining the same guideline for this year. And that was 25% revenue growth, right, sir? That is 24% for EBITDA level, and that is 20 to 25% for this revenue level. Right. So let's say for the sake of argument, I'm saying if you look at a 20% growth for the full year, right, in that case, the ask rate is actually 30% plus in the second half. Now, given we have had a 10% and 5%, where is this significant delta going to come from? Is that from the states, particular states we should watch out for? Is that central government? Is that retail? Or is that something else?
So our historical trend is that H2 is always better than H1. So we are hoping for the same. Sir, I'm comparing 2H versus 2H last year. Yeah. So for that we need So to there- wait for H2 completion. We have some plan on our floor. Once we will execute and then we'll deliver the result. No, fair point, sir. I was just curious to know where the growth is going to come from. Is it state, central schemes, or the retail sales? I From was all just together. trying to understand that. From all together. All right. You know my business. Right. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Nikhil Abhyankar from UTI AMC. Please go ahead. Yeah. Thank you, sir. So just in addition to the earlier question, what was the revenue from the solar pumps in this quarter? I think last quarter was 452 odd crores for 70,500 pumps. For this quarter, how much is it? It is around 487 crore. 487. Okay. And so, I mean, just doing that math, I mean, the realization in quarter on quarter has dropped significantly. Is it purely because of the mix? You have done higher number of 1 HP and 3 HP pumps, or is it that the pricing has come down drastically? Nikhil, can you come back? Is it because of the change in mix of the products? Have you sold higher 1 HP and 3 HP pumps, or has the prices come down significantly? Yeah. That is, we have already mentioned that whenever the SKUs get changed in the sales mix, then realization will get upward and downward trend. Okay. So going forward, I mean, historically, our average, the ticket size was somewhere around 5 HP. So is it trending lower going forward? Average around 2.5 lakhs. But that depends on the where we have executed. This time we have executed in the Maharashtra. If we will execute in the Haryana and Punjab, there is some different SKUs, which is at around 7.5 to 10 HP. So every quarter we will get the different average. Okay. It depends on the geography where we have executed the pumps. And sir, on the solar rooftop business, till the time our own cells and modules come in, I believe we have a tie-up already for supplying the domestic modules. Yes, we do have a tie-up with a few players. Okay. And can you just give us some kind of a guidance as to what will be the size of this business in megawatt terms, say in FY26 and 27? Honestly, early days. Right now, the entire focus is on setting the basics right, because that's absolutely essential for this growth. Because once the basics are right and we know exactly what needs to be done on the basics, then business is an automatic byproduct, because it's a fairly structured category right now. So I'm purely focusing on the basics to get everything right. So early days for me to talk on the guidance right now. So any substantial revenue should only come in FY27, I believe. Yes, you're absolutely right. So next 12 months, as it was said at the beginning of this call, we are going to see a huge spike. Understood. And can you just talk about the working capital cycle? How much should it be? Should we assume somewhere around 90 days? The nature of this business, as I just mentioned, at a field level, is it's largely on an advance basis. Okay. So in the sense, we have channel partners across the country, and we will sell our product to the channel partners on an advance basis, and they in turn will go ahead and sell it to the end consumers. Okay. So that way, from that standpoint, the structure of this business is pretty good from a cash flow standpoint. Okay. Understood. Thanks a lot and all the best. Thank you so much. Thank you.
The next question comes from the line of Manish Vora from 308 Ventures. Please go ahead. Good afternoon, sir. Am I audible? Yeah, you Sir, a couple of questions. What sort of expenditure we have made till now on the solar panel and cell and module manufacturing? By March 27, we are saying that the capex will get completed. So my question is, how much we have already spent, and what is the source of that funding? Have we taken some debt, or it is entirely through the surpluses available with us? Okay. So we have raised the fund through QIP in July month only. So that is around 292 crore. And for the rest of the fund, we are expecting some debt and some from internal equity. So that depends on the situation of the organization at the time of implementation. And for March 27, that is our internal guideline for 18 months. And we are in the final negotiation process, and we are executing some orders. So we have now in this quarter, we will do some advance to our vendors, some capex LCs. So we will update you in the after this quarter, whatever capex we have done, and for both the projects for our doubling capacity and for this project, we have already published the monitoring agency report for your reference and for your detailed analysis. Okay. So debt tie-up, long-term debt tie-up so far has not happened for our PV module and cell business, as well as doubling the capacity from 5 lakh to 10 lakh as far as solar pumps goes. Is my understanding correct? Yeah. So for doubling the capacity, we don't need any debt, and for this module project, we need debt, some debt, and we are we are confident that our banking partners, we are in multiple banking arrangement. So we have 10 banking partners, existing banking partners, and they are sufficient for this all the funding arrangement. So we are in line with them. Thank you, sir. Any update on the EV business, sir? Yes, EV, we have already invested around 100 crores and we have developed some motors. तो आने वाले समय में यह सभी हम जेबीएम के साथ कर रहे हैं और भी कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट आगे बढ़ाए हैं हमने, तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से आगे आएगा. उसमें हमने कुछ अच्छे टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जिसका रिजल्ट अगले क्वार्टर्स में हमको स्टार्ट होगा. सो सर, मार्च 2026 में जो साल खत्म होगा उसमें हम ईवी से कुछ बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जरूर जरूर जरूर. Right. Sir, last question. If I want to come and meet you and have a look at your setup, वो कब possible हो पाएगा? I have sent an email to your CFO and EY team also, but unfortunately I have not received any response. So, sir, actually we are in a silent period after the quarter ends. That's why we have not responded to you. Mr. Vikas already will connect with you after this Concall, and will arrange the meeting and the plant visit also. Kind of you, sir. Thank you. No more questions from me. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Keval Gala from Naukar Investments. Please go ahead. Yes, thank you for the opportunity. Am I audible? Yeah, you are. सर, दो चीज मुझे पूछना था. एक तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड और एक अपना रेवेन्यू गाइडेंस रिलेटेड. अपना एग्जीक्यूशन लास्ट क्वार्टर में अपन ने प्रेजेंटेशन में बताया था, एक वॉर रिलेटेड कुछ सिनारियो था, इसकी वजह से अपना थोड़ा एग्जीक्यूशन में भी दिक्कत आया. ये साल एक्सटेंडेड मॉनसून हो गया, उसमें भी अपने को बहुत दिक्कत आ गया है इसमें. और रेवेन्यू गाइडेंस में सर लास्ट ईयर FY25 अपना उसमें 2500 CR का अपन ने किया था, और इस साल 25% अपन ने गाइडेंस दिया हुआ है उसका. तो ये हाफ ईयर ऑलरेडी हो गया है, 1200 अराउंड अपना रेवेन्यू हुआ है.
तो सेकेंड हाफ में ये 3000 तक कैसे पॉसिबल होगा सर? ये इसका एक क्लैरिटी चाहिए, कहाँ से इतना अपने को सेकेंड हाफ में इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है? ऑर्डर बुक भी सर 1300 करोड़ का है एज ऑन डेट, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक क्लैरिटी चाहिए था सर। सर एक्चुअली इसमें कैसा है, जैसे मैंने अभी अर्लियर भी आपको बोला है कि मैनेजमेंट के पास पूरा प्लान है और वो अपने प्लान पे फर्म है, इसलिए अभी गाइडेंस में कोई चेंज किया नहीं है। तो सारी चीजें हम आज नहीं बता सकते आपको, पर हाँ हम अपने प्लान पे फर्म है, अपनी गाइडेंस पे फर्म है और वो हम अचीव कर पाएंगे और मार्च 26 में आपको दे पाएंगे रिजल्ट। और सर एक ऑर्डर बुक पे भी पूछना था, अभी एज ऑन डेट 1300 करोड़ का अपने पास ऑर्डर है और आने वाले समय में जरूर अपने पास ऑर्डर आएंगे। तो ये 2 क्वार्टर बचे, इसमें अपन कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? इतना रेवेन्यू अपन कौन से सेगमेंट से अपन जनरेट करने वाले, ये जानना था हमको। तो 1300 करोड़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1300 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। तो अभी कोई बहुत ज्यादा हमको एक्सपेक्टेशन ऑर्डर बुक के लिए मतलब वरी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अभी 5 मंथ है और बहुत सारे ऑर्डर्स आना अभी बाकी हैं। जीएसटी और रेनी सीजन अभी सब कंप्लीट हो चुका है, सारे स्टेट अब अपने अपने ऑर्डर कर रहे हैं, पोर्टल्स आगे ओपन होंगे, उस पर ऑर्डर आएंगे और उसका हम एग्जीक्यूट करेंगे। So there is sufficient order books and business available and opportunity available for our revenue. तो अपन ये गाइडेंस और मेंटेन रख रहे हैं FY26 के लिए, ये 25% जो अपन ने लास्ट ईयर से अपन ने जो गाइड कर रहे हैं वो अभी भी मेंटेन ही है, करेक्ट? जो मैं आपके बात से समझ पा रहा हूँ। तो भी मार्च में मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दिया है, वो सब कंटिन्यू है, देयर इज नो चेंज। ओके 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 सर, थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Tushar Gupta from Shagun Investments. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity. I want to know 2 things. Sir, how these 24% margin is sustainable and how we are looking on that. And second is the fundraise we have done last year. In monetary report, it is showing that 116 crore is still unutilized. So what is the status of capex of previous fundraise we are at the current stage? Okay. So first question is for 24%. So मैंने जैसा आपको earlier भी बोला कि we have seen the inflation in the steel, copper and panel price. बट इन नेक्स्ट क्वार्टर हम देखते हैं कि वो 2 से 3% हमको रिडक्शन वहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि अभी टेम्परेरी है, तो उस वजह से हमारे मार्जिन वापस मेंटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 116 करोड़ के लिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं 250 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था, तो उसमें हम ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं, ऑर्डरिंग कर चुके हैं, वहाँ पे काफी काम चल भी रहा है और ये हम अपनी विद इन टाइमलाइन में कंप्लीट कर जाएंगे, क्योंकि मेजर जो आप उसमें अमाउंट देख रहे हैं वो मशीनरीज का है जो डिलीवरी होने के बाद में पे आउट होता है। Okay, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Preet Nagarshit from Wealth Finvisor. Please go ahead. Yes, thank you. So what I wanted to understand is a little bit more on the KUSUM and the solar pump schemes. So could you shed some light in terms of what do you think is the overall market size for solar pumps, and say how much has been achieved, how much more is possible, and what kind of market share would Shakti pumps be able to grab in this? And of course, we are also hearing that KUSUM 1 itself might get continued or extended. So if you can just share your reading on the whole scenario, that would be great. सर उसमें सर ने ऑलरेडी आपको बोला है कि हम कुसुम पर ही ओनली फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ में, और डोमेस्टिक मार्केट है, कैश बिजनेस हमने स्टार्ट किया है। तो ये सब जो है ना, तो हम अब केवल कुसुम पे ही अकेले डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज जो है कि जैसे सर ने बताया कि केवल कुसुम की स्कीम आने से ऐसा नहीं है, स्टेट लेवल पर भी टेंडरिंग अब ओपन हो चुकी है। सो अब स्टेट के टेंडर्स आ रहे हैं, उसमें भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी अपने आप को देखते हैं। नहीं सही है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, वो तो आपने बोल दिया, वो मैं समझ गया था, मैं तो सिर्फ कुसुम की बात कर रहा हूँ कि आपके हिसाब से कुसुम 2 कब तक आ सकता है, मैं वो पूछ रहा हूँ, और क्या साइज होगा।
कुसुम 2 में भारत सरकार के हाथ में चीजें, और मेरे को लगता है कि अगले एक क्वार्टर में वो कुछ स्कीम को लेके डिसीजन लेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर तक वो हो जाएगा। वैसे इन्होंने ऑलरेडी इसको दिसंबर तक तो एक्सटेंड किया ही है, तो दिसंबर के बाद ही कुसुम 2 आएगा। अच्छा, और आपको लगता है इज देयर अ चांस फॉर कुसुम 1 टू बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6-8 मंथ्स, क्योंकि काफी जो बी और सी है उसमें से काफी कुछ काम बाकी रहा है? पता नहीं, आप देखो गवर्नमेंट क्या सोचती है इसमें। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Shashank Agrawal from Cisco. Please go ahead. सर मेरा बस 2 सवाल था। सर पहला, आपने लास्ट कॉल में बोला था कि सर कुछ प्राइस डिफरेंस है ये गवर्नमेंट स्कीम्स और कैश सेल्स में फार्मर्स के लिए। सर वो एक और बार क्लैरिफाई कर सकेंगे क्या? सर दूसरा, ये सोलर पैनल्स में आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं? हाँ जी, तो आपका जो टेक्नोलॉजी के लिए क्वेश्चन है तो वो अभी हम टॉपकॉन पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि गवर्नमेंट सेल्स और इसमें क्या चेंज है, तो दोनों में डिफरेंस ओनली मॉड्यूल्स का है। यहाँ पे हमको डीसीआर सेल देना रहता है और वहाँ पे हम इम्पोर्टेड मॉड्यूल दे सकते हैं, तो उसी का जो प्राइस डिफरेंस है वो उसकी एमआरपी में कंटिन्यू होता है। सर कितना डिफरेंस है बता सकेंगे क्या? डीसीआर सेल अभी अराउंड 22 से 25 की रेंज में है और ये जो है वो अराउंड 12 से 15 की रेंज में। ओके ओके सर, एक छोटा सा सवाल और। सर आपका जो बीएफडीज है, आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी उसको सप्लाई करने का देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम वीएफडी को लेके हम उसको इंडस्ट्रियल मार्केट में भी करने जा रहे हैं, क्रेन में भी उसको यूज करेंगे और लिफ्ट में भी यूज करने जा रहे हैं, और डेटा सेंटर पे भी हम प्लान कर रहे हैं कि डेटा सेंटर पे भी हमको उसका यूज दिखता है और उस पर भी हम आगे जा रहे हैं उसको करने के लिए। सर मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है आपका वीएफडी का, मतलब किलोवाट का रेंज में? सर इसमें यूनिट वाइज है एक्चुअली, वो हम उसमें 4 लाख यूनिट आज की डेट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं सर, वो वीएफडी इंडिविजुअली मतलब मैक्सिमम कितना लोड हैंडल कर सकता है वो 1 to 20 किलोवाट के है। जो 1 to 20 किलोवाट हमारा जो सीमा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो वीएफडीज है वो 1 to 20 किलोवाट तक हम उसको रेगुलर प्रोडक्शन में कर रहे हैं, लेकिन हमने 100 किलोवाट तक डेवलप करके रखा है। जैसे ही हमको ऑर्डर आएंगे हम उसको डिलीवरी करने के लिए रेडी है। सर ये बीएफडीज और ईवी कंट्रोलर्स का अलग अलग प्लांट है या वो एक ही में है? अलग अलग प्लांट्स है दोनों। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Divyansh Thakur from Finterest Capital. Please go ahead. Sir, my questions are already asked. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The next question comes from the line of Sudarshan Mon from Dursari. Please go ahead. हेलो सर, सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अपने लास्ट 7-8 क्वार्टर से क्वार्टरली रेवेन्यू रन रेट इज बिटवीन 500 करोड़ से 650 करोड़। तो गिवन आवर कैपेसिटी जो कि 70% यूटिलाइजेशन में है, तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में पीक रेवेन्यू क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हम जो है अराउंड 3200 तक अचीव इजीली कर सकते हैं। 3200? अच्छा, ओके सर। जो 26 भी नया कैपेसिटी आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये और एक्सपांड हो जाएगा। हाँ सर, नई कैपेसिटी तो आ ही रही है, उसके पहले 3200 हो सकता है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन वही था ग्रोथ को लेकर, जो पहले अपने लोग पूछ चुके हैं कि गिवन अपना बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम आया, तो सेकंड हाफ में आस्क बहुत ज्यादा हो गया है, तो बट आप कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव हो जाएगा? यस सर। ठीक है, दैट्स इट फॉर मी। Thank you. Thank Due you. to time constraint, that was the last question for today. I now hand the conference over to management for closing comments.
आप सभी लोग इस कॉल में आए, उनका सभी का हृदय से धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. हम सब लोग मिलकर ग्रो करेंगे. धन्यवाद. थैंक यू. This brings the conference to an end. On behalf of Shakti Pumps India Limited, we thank you all for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.